Thank you, COE, and I hope I am audible to everyone. Now, the Center for Modern Indian Languages, the School of Humanities, has constantly striven to bring in as many innovative programs as possible and to include as many Indian languages as possible. So today is a program which has brought in so many Indian languages, and I'm so happy to be able to curate it and bring it before you today. So with the permission of our Vice Chancellor, Professor Nagesha Rao, I'd like to begin by welcoming everyone and by saying a few words about what this program is all about today. I just made a mention of the Indian languages. So we have got English, we've got Hindi, we have got Tamil, and in the songs that will be sung today, we will have Tamil and Kannada, Sanskrit, Braj Bhasha, so, and Rajasthani as well. So this is going to be such a wonderful coming together of the Indian ethos. It is the Indian essence that will be coming out this morning through this webinar, through what our esteemed speakers, Dr. Parthasarathy and Professor Bajrangji will be talking to us about, the poets, and then the singers will be expressing what the poets have been saying in their poetry. Now, Krishna has been an inextricable part of our Indian consciousness. He is there in our poetry, he is there in our dance, he is there in our music, he is there in all our miniature paintings. We cannot talk about the Nayika without bringing in the Krishna motif. So, Krishna is all around us, everywhere in our mythology. He is there as lover, philosopher. He is there as a mischievous young man, a young child who steals butter. He is a prankster. He loves to play pranks on the Gopikas. And and of course, we cannot forget the Bhagavad Gita, which is so full of philosophy. But above it all, we cannot think of Krishna without music, without his divine flute, which mesmerized everyone who heard his flute, whether it be animals, whether it is human beings, whether it were on the gopis, who would just neglect their chores and run across to listen to his music, to listen to his flute, which is why I wanted today's program to be a mix of not just speaking about the poetry, but also to bring in the music that is so much a part of what we think of when we think of the Lord Krishna. And throughout our literary history, starting from the 6th, 7th, 8th century onwards from Tamil Nadu, when the Bhakti movement began with the Arvar saints, and Andal wrote about Krishna as well. And then the Bhakti movement spread across India. It became a pan-Indian movement, and so many other poets started writing religious poetry full of the divine realization, full of the need to surrender to the divine. So we have Surdas, Meera, Ras Khan. We have a number of poets. So today we will be talking about some of these poets. It was not possible to talk about all of them. So we will begin with the Tamil Arvar saints, and then we will move on to Meera, Surdas, and Ras Khan. And in between, we will keep having our beautiful singers today who will join in and who will give us just a sample of what all this poetry is when it is set to music, and how divine it feels just to be able to listen to all this music. So I would like to welcome you all today. I would like to welcome our singers here today who have very, very generously offered their time to us. We have Yamini from Chennai. We have Sushmita from from the IGNOU family, and we have Madhulika Nag from Ajmer. And Dr. Parthasarathy has joined us from the United States of America, and it is past his bedtime, but he has very, very happily stayed awake for us. Thank you, sir.
And we have Professor Bajrang Bihari Tiwari from Delhi University with us today. And I am very happy to see the celebrated Tamil writer Vasanthi has also joined us. Welcome, ma'am, and thank you so much for being a part of this today. So before we begin the talk and the singing, I'd like to request Dr. Sushmita Bhaskar, who is here with the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies, IGNOU, to begin with the invocation. She has specialized in environmental science, but music is her first love, which she herself has always said. And she has won a number of plaudits and awards in her field of specialization, as well as in music. And she began her primary training from Srimati Lalita in Coimbatore, and she has been performing at various concerts. She sings Carnatic vocal music, classical music, and today she will begin with a hymn in Kannada, which is Krishna ni begane baro, which means please come, Krishna, please come. And it seems appropriate to begin this webinar on the Krishna theme by invoking Krishna and saying, please come with your divine presence and please bless us today. So this is poetry which has been written by Vyasatirtha in Kannada. So I would like to request Sushmita to please begin. Good morning, ma'am. Thank you for the introduction. Krishna ni begane baro, 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 begane bayaro, mugavalno toro, begane bayaro, mugavalno toro, nilavarnane नाट्य आडितनम्मा नीलवर्णने नाट्य आडितनम्मा कृष्ण नि बेगने बारो दाई के पायले जगवल्नो तोरिका, दाई के पायले जगवल्नो तोरिका, जगदोद्धारक नम्मा उडुपी श्री कृष्ण, जगदोद्धारक नम्मा उडुपी श्री कृष्ण, कृष्ण नि बेगने बारो, कृष्ण नि बेगने बारो, बारो, बारो. Thank you, Sushmita. That was lovely. That was really beautiful. Now, the concept of this webinar was swimming in my mind for a very long time. और मैं ये देखना चाह रही थी कि मैं किस तरीके से इसको मैं करवा सकती हूँ जिसमें बातचीत भी हो जाए, गायन भी हो, because I wanted it to be a combination of both lecture and singing.
And when I spoke to Dr. Parthasarathi, he was very open to this idea, and he immediately said that he would coordinate with Yamini, who will be a part of his presentation today. And then I was also talking to Professor Bajrang Bihari Tiwari. And I think at first उनको थोड़ा सा ये लगा कि ये दोनों किस तरह से एक ही presentation में दोनों कैसे हम सम्मिलित करेंगे, कि मैं बोलूं भी और कोई बीच बीच में गाए तो उससे कोई व्यवधान तो नहीं पड़ेगा। तो मैं जब उनसे बार बार ये कह रही थी कि हम इसको ऐसे करके देख लें, तो शायद मेरा पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा ठीक है चलिए कर लेते हैं ऐसा, लेट द एक्सपेरिमेंट बिगिन, let the experiment happen. So, sir, thank you so much. I think आपके जो misgivings थे, आपके शायद जो आपकी शंकाएं थी मन में कि कैसे होगा, I hope today we will be able to sort that out. And I thank you for going along with me, for saying yes to the kind of presentation that I wanted today. Thank you so much, sir. And now I'd like to introduce our very first speaker today, Dr. T.K. Parthasarathi, a very young man who has joined us from the US. And he has a background in physics and law. And after he retired, he went in for a graduate and a postgraduate degree in Vaishnav studies. And he's a scholar of Vaishnavism. And at the moment, he is a guest faculty with the University of Madras, the Department of Vaishnavism, where he teaches postgraduate students, and he is also teaching students. He is connected to the Aragappa University in Karaikudi. He has 5 books in Tamil and 1 in English, and he has been a speaker at a number of conferences. He has published extensively, and he is a scholar, and his PhD is in the field of philosophy, which is Vishishtadvaita philosophy. So I'd like to request you to make your presentation, sir. And accompanying him today within his presentation is Yamini ji, who is an accomplished singer. She had her primary training under her mother, Srimati Vaidehi, and then she went on to get a degree in music from Delhi University. And she is a classical singer. She has performed extensively in India and abroad. She has brought out a number of albums, and her primary focus is on the composition and the singing of the Arvad hymns. So she of the Sri Vaishnav Sampradaya. So Yamini, I am very glad to be able to welcome you, and I'm very happy that we will be having your mellifluous voice accompanying Dr. Parthasarathhi's scholarly lecture. So I'd like to invite you both to begin your lecture, please. Respected scholars and academicians, thank you very much for having me here today. Let me first express my deep sense of gratitude to the organizers of this webinar, and particularly I am indebted to the Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao, and personally to Professor Srimati Malati Mathur, who coordinated with me. Very much pleased to be here in your midst in this webinar on poetry and music on Lord Krishna. Poetry and music have been intertwined for thousands of years. Gladness, sorrow, yearning, hope, and love belong to all of us. At all times and in all places, music is the only means whereby we feel these emotions in their universality. Before coming to my topic, let me give you a brief intro about Tamil as a language, as I am to speak on Alvars who have sung in Tamil. Tamil was the first to be classified as a classical language of India. It is one of the longest surviving classical languages in the world. A.K. Ramanujam, professor of linguistics, University of Chicago, describes it as the only language of contemporary India
which is recognizably continuous with a classical past. The variety and quality of classical Tamil literature have led to its being described as one of the great classical traditions and literatures of the world. Recorded Tamil literature has been documented for over 2000 years. The earliest period of Tamil literature, that is called Sangam literature, is dated from 300 BC until 300 AD. This was followed by the Bhakti movement spearheaded by Alvars. The movement originated in South India during the 7th to 8th century AD. I mean by movement, the Bhakti movement. It is spread northwards from Tamil Nadu through Karnataka and gained wide acceptance in the 15th century in Assam, Bengal, and northern India. The movement started with a Saiva Nayanmars and Vaishnava Alvars who lived between 5th and 8th centuries. Their efforts ultimately helped spread Bhakti poetry and ideas throughout India by the 12th to 18th century, heralding the waning of Buddhism and Jainism, which had a large grip over the people that time. When we talk of poetry on Krishna, immediately our mind goes to Madhurastakam. Excuse me. Which is a Sanskrit octet in the devotion of Lord Krishna, composed by Saint Sri Vallabha, who propagated his Pushti mark, which emphasizes the unconditional bhakti and seva to Krishna. The thought behind the composition in bhakti mixed with love is a typical frame of devotion and dedication in the bhakti movement, which is reflected both in Vallabha's hymns and Alvar's holy utterances. In the loud bhakti frame, the devotee falls in love with the Almighty, and to the devotee, all the attributes and actions of Lord appear sweet as those appear to a lover. The Madhurashtakam deals with the qualities and deeds of Lord Krishna, all of which have been conceptualized as being dipped in madhu, meaning honey or nectar. In the eyes of the devotee, everything that pertains to Lord is sweet and graceful, he being the Adhipati, Lord or Godhead of all sweetness. Before plunging into Alvar's holy hymns, let me experience Vallabha's poetic sweetness a little. Now I request Yamini Ramesh to render two stanzas from Madhurashtakam as a prelude to Alvar's Pasurams. Just a word about Srimati Yamini Ramesh. She is a trained Carnatic musician and is an accomplished artist. Deeply devoted to Vaishnava Sampradaya, she is a student of MA Vaishnavism, a unique course offered by the University of Madras. Her recent release of audio, Vrindavana Malika, Andal's 143 hymns of Nachar Tirumozhi, is a very popular and we are fortunate to have her in our midst. I am thankful to her for her glorious assistance by way of singing. Srimati Yamani, please. Madhurashtakam, two stanzas. Thank you, sir. Namaskaram to everyone. Adharam madhuram vadanam madhuram nayanam madhuram hasitam madhuram adharam madhuram vadanam madhuram nayanam madhuram hasitam madhuram hridayam madhuram गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वनितं मधुरं वसनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वनितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं Thank you. His lips are sweet, his face is sweet, his eyes are sweet, his laugh is sweet, his heart is sweet, and his gait is sweet. Everything about Lord of Madura, that is Krishna, is so sweet. This is the meaning of the first stanza. The second stanza, his words are sweet, his character is sweet, his dress is sweet and charming, and his posture is sweet. His movement is sweet, and his wandering is sweet. Everything about Lord of Madura is so sweet. Now, coming to Alvars. The high place occupied by Alvars in the Tamil poets, those Alvar means those immersed in God, has espoused emotional devotion or bhakti or incessant love to Vishnu in their songs of longing, ecstasy, and service. The orthodoxy posits the number of Alvars as 10, though they are actually 12 in number. The devotional outpourings of Alvars, composed during the early medieval period of Tamil Nadu, helped revive the Bhakti movement through their hymns of praise to Vishnu and his incarnations. Their outflows of the divine ecstasy are accepted as authorities equal to the validity of Vedas and are called Dramida Veda. In fact, they are considered to bring us nearer to God as they depict the incarnation of Lord Narayana. We call them as Vibhava Avataram, like Rama and Krishna, and also eulogize God's images in various temples, that is called Archavadara, like Srirangam temple and Tirupati temple. The Bhakti literature that sprang from Alvars has contributed to the establishment of and sustenance of a culture that broke away from the ritual-oriented Vedic religion and rooted itself in devotion as the only path for salvation. Tamil Alvar's hymns are nothing but a reflection of what Madhurashtakam implies, with the time difference of a few centuries in between. They spread Vaishnavism through their hymns, and their full compilation is named Nalayira Divya Parvandangal, that is 4,000 holy hymns. Sri Vaishnavas revere the collection of 4,000 songs as holy as Sanskrit Vedas, calling them Tamil Veda, and asked to chant in every occasion of worship, be it at home or at temples. The Vaishnava who has learned both these Vedas are reverentially called Ubaya Vedanti. Ubaya means two, Ubaya Vedanti. He is scholar in both Tamil Veda as well as Sanskrit Veda. The Alvars have sung in praise of Vishnu on his incarnations, two which are 10 in number, Dasavadaram. Predominantly, they cover Rama and Krishna. More than Rama, we find Krishna or Kannan in our own parlance. Kannan is very dearer to them all. In fact, the chief among Alvars, Nammalvar, is reverentially called Krishna Trishna Tattvam because of his indulgence in Krishna Bhakti. Krishna Trishna means thirst for Krishna. He has always a thirst, unquenchable thirst for Lord Krishna. Lord Krishna is divine, and so also his acts. He is indeed very naughty. Mischief is one of his main traits.
He likes to court with women in the forest or under the moonlight, often erotically, and he seduced cowherd wives with his beautiful looks and his masterful playing. As a child, he eats clay and mud despite his parents' scolding. He steals butter and plays pranks. One particular Alvar, Alvar, the foster father of Andal. Andal, you must be knowing, she is the author of Tirupavai and Nachar Tirumuri. He, Alvar, is enjoying his childhood days from birth to his boyhood, enjoying each stage, and the verses are known as Pillai Tamil. It is about a boy, child, grown up to a boy level. These are all enjoyed by Periyalvar in his 405 verses. Alvars take various forms of women. Here, as a mother, Periyalvar addressing her friends and her enjoyment of the Lord's divine beauty from the toe to the top. சீத கடலுள் அமுதன்ன தேவகி கோதை குழலால் அசோதைக்கு போத்தந்த பேதை குழவி பிடித்து சுவையுண்ணும் பாத கமலங்கள் காணீரே பவளவாய் வந்து காணீரே. This I already. Now Madam Yamini will sing the above song. சீதக்கடலுள் அமுதன்ன தேவகி சீதக்கடலுள் அமுதன்ன தேவகி சீதக்கடலுள் அமுதன்ன தேவகி கோதை குழலாள் அசோதைக்கு போதந்த சீதக்கடலுள் அமுதன்ன தேவகி கோதை குழலாள் அசோதைக்கு போதந்த பேதை குழவி பிடித்து சுவை துள்ளும் பேதை குழவி பிடித்து சுவை துள்ளும் பாத கமலங்கள் காணீரே பவளவாய் வந்து காணீரே பவளவாய் வந்து காணீரே. முத்தும் மணியும் வைரமும் நன் பொன்னும் முத்தும் மணியும் வைரமும் நன் பொன்னும் தத்திப்பது தலை பெய்தார் போல் முத்தும் மணியும் வைரமும் நன் பொன்னும் தத்திப்பது தலை பெய்தார் போல் முத்தும் மணியும் வைரமும் நன் பொன்னும் தத்திப்பதித்து தலை பெய்தார் போல் எங்கும் பத்து விரலும் மணிவண்ணன் பாதங்கள் எங்கும் பத்து விரலும் மணிவண்ணன் பாதங்கள் ஒத்தித்திருந்த காணீரே பொன்னுதலி வந்து காணீரே பொன்னுதலி வந்து காணீரே. உழந்தாள் நரனை ஓரோ தட இழந்தால் நெறிவினான் ஈர்த்து எழில் மத்தில் பழந்தாம் பாலோச்ச பயத்தால் தவழ்ந்தான்
முழந்தாள் இருந்தவம் காணீரே முகில் முனை வந்து காணீரே பழந்தாம் பாலோச்ச பயத்தால் கவிழ்ந்தான் முழந்தால் இருந்த காணீரே முகில் முனையில் வந்து காணீரே முகில் முலையீர் வந்து காணீரே. Srimati Yamini has now sung 3 verses. I will explain one by one. The meaning of the above first verse is the cool ocean from which arose the nectar. That nectar like Devahi, so godly with a sattvic character. See the Kadalul Amudanna. He is like a nectar and she is so cool. The baby was given to the most fragrant flower bedecked haired Yasoda. Yasoda has having the lot of hairs and she was handed, the baby was handed over to Yasoda by Devaki. The poor child is holding with a small tiny fingers his little lotus feet and enjoys chewing and sucking it. Looking at that, oh coral mouthed friends, come and see. She is calling all the ladies of the Vrindavan to come and see the coral mouthed friends because she addresses them. In one of the songs, Andal says, ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் வளர்ந்து. That is the reflection of this song. You were born to one lady in one night and was brought up by another lady in the same night or another night. So this is the gist. Second Pasuram, she started with this Muttumani, Vairam and other things. Alvar's verses bear the name Pasuram, that I want to explain why, which is a divine hymn and can be tuned as a song and is done as is done now here. The language Tamil is known as Muttamil, as it can be expressed in Iyal, Isai, Nadagam, prose, poetry and drama. Here a word about Arayar Sevai. These 3 combination is expressed in one Sevai, that is called Arayar Sevai. It is a Tamil performing art form centered on the ritual singing and enactment of hymns of the Divya Prabandham. It is generally performed only inside Vaishnava temples in the presence of temple Usavar. The temple's processional deity is called Usavar by hereditary performers. This is done in the month of Vaikunta Ekadasi. Although temple inscriptions suggest its performance was once widespread, it is today it is performed in few temples like Srirangam, Alvar Tirinagar and Srivilliputur. Alvar Tirinagar is the birthplace of Nammalvar and Srivilliputur is the birthplace of Andal. Arayar Sevai owes to existence to Nadamuni, the Acharyan of Ramanuja, who lived almost 1002 years ago. Now, the second song she sang, Muttum Maniyum Vairamum Nanponnum, Tatti Padittu Thalai Peidar Pol Engum, Pattu Varilam Manivannan Padangal, Ottittu Irdava Kaanire, Onnudalirundu Kaanire. The most valuable pearl, diamond, sapphire, gold are all arranged so closely and alternatively and beautifully as the little fingers of the toe of blue-hued Manivannan. Manivannan is the name of Krishna. He is a sapphire colored. Look at the divine beauty of these cute little fingers. Oh, glowing forehead ones. Come and see. Now we will move to the third song. Kannan and butter are inseparable. In another verse, the Alvar speaks about Yashoda's encounter with Kannan. We call Kannan always Lord Krishna is known more popular as Kannan in Tamil Nadu. When he just finished eating stealthily one potful of butter, Urandal Narudala Ordala Unna Irandal Pirivinal, that goes.
that she has already sung. Now, Yasoda, who had taken so much effort to make and collect the ghee, lost one by one every part of fragrant butter, angered terribly by it, pulled and dragged the baby Kannan, the culprit, and attempted to beat him with a mattu. Mattu is mortar, stick that is used to churn the curd to get butter. While she did that, our little lord, with quivering lips, moist eyes, and scared face, bent and knelt down, crawled on the ground with his knees to move away from there in order to escape the beating. Oh, large hearted ladies, come and see his knees. Even the knees, Periyalvar wants the ladies to see. So much beautiful every part of Lord Krishna. Having taken so much effort and she lost all the butter, she did not bother about the butter, what would have done to the baby who had eaten so much. She was worried that his health should not get affected. Yasoda wanted to tie him up to arrest his movements, and she brings a string. She brings a string to tie him up. That is not enough. She joins with another piece of string. That is also not enough. Again, she tries. After all, she does not realize she cannot tie up such an omnipotent, omniscient entity. Madragavi Alvar is another Alvar who is the disciple of Nammalvar, has sung 11 verses on his Acharya Nammalvar. Divya Prabandham speaks only about Lord, but Madragavi Alvar's Pasuram is also taken as one of the Divya Prabandham text because it is equivalent to, because here in Vaishnava concept is Acharya Bhakti is more important than Brahman Bhakti. That's what we view that. So his hymns are known as Kanni Nun Siridaminal Katrunna Panniya Perumayan, who permitted himself to be tied up. Because nobody can tie him up, but he permitted himself to be tied down to the mortar by his mother. A multi-knotted small rope with so many knots. Kindly note, she didn't tie, but he allowed to be tied down by her. This is the meaning of Kanni Nun Siridaminal Katrunna Panniya Perumayan. She tried to tie up Krishna and martyr with a rope. Periyavachan Pillai, later Acharyan, who wrote an extensive commentary on all the Prabandhams, he says she found both Kannan and the martyr are culprits because that's why she tied both. Because martyr helped Kannan to reach the butter part. He put the martyr down and climbed and got that. So martyr is also responsible for the theft of butter. So Yasoda tied both martyr and Kannan. So here I would like to say Madhusudan Saraswati, a renowned Advaitin. Advaitin, they don't consider, they have two Brahmans. One is Paramatika Brahman, the other is the Vyavaharika Brahman. Madhusudan Saraswati, he says Brahman, which is pure existence, consciousness, bliss, which is without parallel, which is absolutely free from limitations of time and space, which is always free from control of Maya, which is very well explained by innumerable statements in the Upanishads, but is yet clearly grasped by mere study of the Upanishad. But the realization of the whole identity with one's own self is what constitutes the highest Purushartha, namely liberation from the cycle of birth and death. This is the Advaita philosophy in nutshell. That very Brahman is present. We need not search for Brahman anywhere else. That very Brahman is present in the concrete form here in the home of Yasoda, tied up in a small rope. This is indeed great good fortune for the people. One more Alvar, Kulasekara Alvar, is different from other Alvars. He hails from Cheranad, present Kerala. He assumes the role of Mother Kaushalya and sings a lullaby
which is quite unknown in the original version of Sanskrit epic Ramayana. We know Krishna as a child, but nobody knows Rama as a child. Rama's childhood days are never recorded in any of the Ramayana. Here, our Kulasekara Alvar, he says he enjoys the childhood happiness of Rama Avatar also. Now let us take up two more Alvars, Nammalvar and Tirumangai Alvar, who have contributed to the Nalayana Dibya Prabandham on a massive scale, each more than 1,000 verses. Out of 4,000, these two occupy 50% of the total pasurams. So far, we enjoyed the child Krishna and how Periyalvar experienced the childhood pranks of Lord Supreme. Now the baby Kannan had grown into a youth with inimitable charm and attracting the gopis of Vrindavan. The bhakti which Nammalvar and another later Alvar, Tirumangai Alvar is the last Alvar in the list, turns into ecstasy and does not stop with mere love. They both long for union with Kannan. So they both assume the female role. They sing verses as Talevi, Tayar, and Tori. Talevi means heroine, Alvar himself. Tayar means mother. Tori means friend. And the latter two, mother and friend, they state about the heroine's condition who is languishing for a union with the Lord. Here the heroine is Alvar himself, joining and separated from the Lord on and off. That is Samslesham and Vislesham in Sanskrit. The other two characters, mother and friend, are always worried about the pangs of separation of Alvar. We enjoy a few drops of in the ocean of Alvar's love. Both the Nayaki's lovelorn feelings is causing the intense desire for Kannan. He alone is Purusha, male, and all of us are Stris, woman. Bhakti is love for Lord. Singara Rasa, the plight of lovers, is in play, and here the lovers are God and Alvar. My daughter sends her parrot as messenger after teaching it and hearing it repeat the lessons. She plays on the veena, dances, sings, gets happy, and tired when he does not come. Her eyes get filled with tears and wets her. She thinks, what if Kannan comes outside my door? She comes outside and looks for him, but he fails to arrive and she starts doing Namasmaranam. And she says, mother to her friend, one body and soul belong to him. Each part of the body is for him only. The eyes should thirst for his darshan. The ears should listen to his stories. The hands should long to touch him during prayers and to sing flowers for him. The legs should go for walking to his temple to run after him. Desiring for Krishna Bhakti is not against the total surrender or pravati. Now, the description in the mother Parakala Nayahi, Tirumangai Alvar is always called Parakala Nayahi when he assumes the role of a female. About the daughter's discharged status as Nayaki deeply in love with the Nayakan, the Lord. Kandrumaithu Inidugalai Endrum Kadipozhil Thul Kannavurathien Kaniye. This is the opening sentence of the song. Now I request Yamini to continue the song. கன்று மேய்த்து இனி துகந்த காளாய் கன்று மேய்த்து இனி துகந்த காளாய் என்றும் கடி பொழில் சூழ் கணபுர தென்தனியே கன்று மீத்து இனிதுகந்த காளாய் என்றும் கடி பொழில்
சூழ் கணபுரத்தன் தனியே மன்றமர கூத்தாடி மகிழ்ந்தாய் எழுதும் வடதிருவேங்கடம் நேய மைந்தா என்னும் வென்ற சுரர் கூலம் களைந்த வென்ற சுரர் கூலம் களைந்த வேந்தே வென்ற சுரர் கூலம் களைந்த வேந்தே விரிபொழில் சூழ் திருநரையூர் நின்றாய் வென்ற சுரர் கூலம் களைந்த வேந்தே விரிபொழில் சூழ் திருநரையூர் நின்றாய் துன்று குழல் கரத்திரத்து துணையே துணை மூலையில் துளி சோர சோர்கின்றாளே துன்று குழல் கரத்திரத்து துணையே துணை முலை மேல் துளி சோர சோர்கின்றாளே Hello, sir. You are on mute. Parthasarathy sir, you're on mute. You are mute, sir. Hello, sir. You are on mute. Now, okay. Yes, yes. Thank you. This Thirumangai Alvar portrays himself a female and did Madal Urudal. In Sangam time, the hero wants to publicize his love and makes a horse made of palm leaves and draws his lover's picture in a cloth so that the public can know the affair. I think that was the system, that was the social media at that time, I think. This Alvar has blessed us with two Prabandhams, Siriya Thirumadal having 41 verses and Periya Thirumadal 78 verses. Now coming to Nammalvar, the doyen of Alvar family, who is called Parangusanayagi. The feelings of the Thirumangai Alvar is Parakalanayagi, Nammalvar is Parangusanayagi. The feelings are not different. He is highly regarded as a great mystic of Vaishnava tradition. He is also considered to be the foremost among the 12 Alvars. Nammalvar says in his Pasuram on Srirangam Lord, assuming the role of mother. In fact, you can say Tamil literature is divided into two, Agatturai and Puratturai. Agam talks about love, Puram talks about war. Nammalvar has blessed us with another 100 verses Prabandham Thiruvirtham, out of which 98 speak about his love to Lord himself. For him, Kannan is all. Unnum soru, parugu neer, thinnum vettrile ellam Kannane. This is what Nammalvar says. He is a food, water, bitter leaf. All Kannan, Dharagam, Boshagam, Bhogyam.
very essential, very much nutrient, and very much luxury. He says in this pasuram, Kangulum Pagalum Kantuil Arial. Kanguling means night, Pagal means day. Night and day, my daughter is not sleeping. Now I request Srimati Yamini to sing that song. கங்குலும் பகலும் கண் துயிலறியாய் கண்ணநீர் கைகளால் இறைக்கும் சங்கு சக்கரங்கள் என்று கை கூப்பும் தாமரை கண் நின்றே தளரும் தாமரை கண் நின்றே தளரும் எங்கனேதரே முன்னைவிட்டு எங்கனேதரிக்கே என்னை விட்டு திருநிலம் கை துழாவிருக்கும் திருநிலம் கை துழாவிருக்கும் செங்கையல் நீர் செங்கையல் பாய் நீர் திருவரங்கத்தாய் செங்கையல் பாய் நீர் திருவரங்கத்தாய் இவள் திறத்து என் செய்கின்ற இவள் திறத்து என் செய்கின்ற Thank you, Yamini. My daughter's eyes do not even realize to sleep in night and days. She is removing the tears from her eyes with her hands, saying Sankha and Chakra. Sankha and Chakra are the inseparable weapons of and also ornaments of Lord Vishnu. She would perform Anjali which she would do upon his arrival, saying lotus like I. She would become tired. She would say, how will I sustain without you? She would search the ground with her hand and will remain in an inactive state. Oh, one who is residing in Srirangam, which is having water bodies in which youthful reddish fishes jump and around. What are you planning to do for the girl who is having these amazing emotions? Which implies, are you planning to eliminate the sorrow or increase the same? Such a lustful bhakti known as Viraga Bhakti manifested in these verses is similar to that of passion of the milkmaids of Vrindavan. In Andal, the Viraga Bhakti attains its most intense and acute form in Nachar Tirumuri. It is the work full of erotic suggestions and wild passions. She says, God of love, I plead, aim my flower body into his. Auspicious, incandescent, and virginal, I am to accept this. Fire me into dark, one who causes great emotional pain as he enters my heart. Of course, Andal's feelings are natural, being a woman. But Alvars like Nammalvar and Tirumangai Alvar are man with men, and they assume the female role just to enjoy the bhakti.
All humans seek moksha as their life ambition, a state of non-return to the world in any form, and definitely that is what Ramanuja has taught for us. Let me wind up my speech with an inspiring poem from a great Persian poet, Jalaluddin Rumi, which reflects the philosophical concept envisaged by Ramanuja. I died a mineral and became a plant. I died a plant and rose an animal. I died an animal and I was a man. Why should I fear? When was I less by dying? Yet once more I shall die as a man to soar with the blessed angels. But even from angelhood I must pass on. All except God perishes. When I have sacrificed my angel soul, I shall become that which no mind has ever conceived. Oh, let me not exist, for non-existence proclaims to him we shall return. So thank you all for being here today. I really appreciate that you took your valuable time to be here and listen to my presentation. Thank you very much. I think I have taken exactly half an hour. Thank you very much, madam. Thank you, sir. Thank you, sir, and thank you for adhering so strictly to the time. Thank you so much for all the references that you made and filled in so many gaps in our knowledge. Thank you so much, sir. Romba romba nandri, sir. Yes, I spoke in Tamil and Sanskrit, Tamil and English. You also thank me in Tamil and English. Sorry? You also thank me in Tamil and also in English, just like my speech. And Yamini, your singing was absolutely divine. என்ன சொல்றது யாமினி வார்த்தையே கிடையாது நம்ம ஊர் பாஷையில சொன்னாக்க சூப்பரா பாடின. Thank you so much, Yamini, and thank you, Dr. Parthasarathy, sir, for being with us this morning. And now I'd like to request our Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao, to say a few words. Good noon to all of you. It was really mesmerizing to listen to Parthasarathy ji speaking from US, and that to midnight. But he took great pains to share his insight with all of us. For the first time, I am seeing a workshop wherein poetry as well as the speech both are being integrated, and that too on a theme to which we all are quite familiar. Realizing Krishna, very difficult proposition. We know Krishna somehow, but realizing Krishna, not so easy to understand and comprehend. But Parthasarathy ji has tried to explain it, tried to show the basic crux that how we can realize Krishna. Same day, the mother which gave birth and the mother nurtured him. The instances how he put at one place for our own understanding, because at least I am purely a layman. And Malti ji has asked me to be present over here and listen to you all. So I am just listening to you all. And I must compliment Malti ji also, who is taking great pains to establish this Center for Modern Indian Languages. All the regional languages, they are being put over here at one place. We are putting all these regional languages in our BA program also.
And this is somewhat a different experience. It will be available to all our learners of undergraduate program, because we do have a reach of 35 lakh learners. And we try to see that how best we can give the best possible inputs we try to provide to them through our digital network. This is the Facebook, but we are having our own channels. We are also having the Swayam Prabha channel of the Government of India. All these, they are being used for the purpose of reaching to our learners. Even in BA program, we get around 3 lakh learners, 3 to 4 lakh learners every year, nationally as well as internationally. And for them, this particular workshop is of great use to the teachers as well as the learners also. I'm also thankful to Bajrangi Lalji, who will be sharing his insights in this workshop. Yamini ji, we have already listened to her, but again, I think she may join us for some more performances. Madhulika ji, she is already present over here also, and may be eager to present her performance or the song. But what I'm visualizing it, the enthusiasm, the zeal in making the presentations, that is clearly visible from the distinguished speakers. It is really an eye-opener to many of us how poetry, they can be interlinked, and thereby the philosophical aspects of looking at Krishna, that can be understood clearly. I am here to listen to you all only. And I am here to express my thanks on behalf of the university also to all the distinguished speakers. Of course, Sushmita is from our own family. But going beyond our family, we see that the people who devoted their whole life in this yajna, now they are giving their amrit to all of us. And that is quite important to all of us to understand that how this amrit can reach to all our learners. And our faculty is eagerly looking into it, trying to get exactly the crux of the whole issue. Very difficult to realize Krishna, but still the efforts are to be made. Krishna is not an individual. It is a character. And that character has got so many dimensions. And that dimensions we have to understand, and how those dimensions, they can be integrated. That is what we are getting it in this workshop of eminent speakers. Thank you for giving me this opportunity to be with you all, and that too by force by the director SOH, because initially I said that what will be my role here? Because neither I know the poetries, nor I understand the music. Only thing which I can do is I can listen. And that listening is going on. And one thing is, listening is, if you listen, then your ability to concentrate goes up. Your ability to think, the critical issues also goes up. That is the advantage which you all may derive.
And music is one of the area which tells us that how to enhance our creative wisdom. And it is well established belief as well as scientific process also. People say that if you are careful in listening to music, your ability to generate newer ideas that goes up. And that is why I must appreciate the efforts made by Malti Mathur and her whole team. Once again, I thank Parth Sathi ji, Bajrang Bihari Tiwari ji, Yamini ji, Madhulika ji, and all other distinguished guests present over here. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Our Vice Chancellor is always very modest when he says he does not know much about poetry or music or anything else. He loves to be self-deprecating, but as his words indicated just now, he does know a lot. He does analyze and think about a lot of things. And he is always so encouraging and very, very supportive of experimentation, supportive of innovation, and always has been supportive of not just the School of Humanities, but of the Center for Modern Indian Languages as well. So thank you very much, sir. It is your fine sensibility that has allowed us to make these kind of things possible. So thank you once again. Thank you for your kind words, and thank you for the fine distinctions that you made about realizing Krishna and how we may strive to do it, but actually realizing Krishna is such a difficult proposition. Thank you, sir, once again. And now we would like to move on to our next speaker, who is Professor Bajrang Bihari Tiwari. He is from the Faculty of Hindi, Deshbandhu College, Delhi University. He is a known scholar और भक्ति काव्य, दलित आंदोलन, दलित साहित्य के ये जाने माने स्कॉलर हैं, वक्ता हैं, और इन्होंने करीब 10 किताबें इन्होंने प्रकाशित की हैं और इनके अलावा कई बुक्स इन्होंने संपादित किया है। तो आज ये हमारे समक्ष कुछ कवियों के बारे में बात करेंगे कृष्ण के संदर्भ में, सूरदास, मीरा और रसखान, और इनका साथ देंगी श्रीमती मधुलिका नाग, जो कि she brings with her a legacy of music. उनकी जो प्राइमरी ट्रेनिंग हुई थी, it is from her father, Pandit Ramlal Mathur, and got her MA degree from Udaipur University. At the moment, she is a principal of the Pandit Ramlal Mathur College in Ajmer, and also the president of the Sanskar Bharati of Ajmer chapter. Madhulika ji सितार और गायन दोनों ही में ही ऑल इंडिया रेडियो की आर्टिस्ट हैं। और एक तो वाकया तो मैं जरूर सुनाना चाहूंगी, जब अजमेर में बीच में बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा था, बारिश नहीं हो रही थी, सब लोग बहुत परेशान थे, तो वहां पर बीसलपुर बांध है, तो वहां इनसे अनुरोध किया गया कि आप वहां चलिए और आप कुछ ऐसा गाइए बजाइए जिससे कि शायद बारिश हो जाए। और इन्होंने जो उधर बजाया उससे सचमुच बारिश हुई। ये दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ रिकॉर्डेड फैक्ट, ये अजमेर के सभी अखबारों में भी ये बात छपी। एंड सो आई डू नॉट नीड टू इंट्रोड्यूस हर फर्दर बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड व्हेन शी सिंग्स along with the lecture of Professor Tiwari. And मधु जी की मैं विशेष रूप से आभारी इसलिए हूँ क्योंकि इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। 2-3 दिन पहले जब मेरी इनसे बात हुई तो इनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। शी वॉज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, तो उसके बावजूद ये आज यहाँ गाने के लिए मौजूद है हमारे साथ। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। एंड आई लुक फॉरवर्ड to listening to both of you. So Professor Bajrang ji, आपसे अनुरोध है कि आप अपना प्रेजेंटेशन करें। बहुत धन्यवाद मालती जी। मैं आदरणीय, हाँ आवाज तो मेरी पहुंच रही है ना?
जी जी आ रही है, हाँ। अब आ रही है अच्छा अच्छा। जी। हाँ, तो मैं बहुत आभारी हूँ इग्नू का, मानविकी संकाय का, कि मुझे मौका दिया। मैं अपने कुलपति महोदय राव साहब को, मालती जी को, अपने पूर्व वक्ता, दोनों वक्ता जो जिन्होंने प्रस्तुत किया, परफॉर्म किया, वैष्णव आलवार संतों की वानियों को, अपने साथी मधुलिका जी को, और जो इग्नू से हमारे बहुत से मित्र जुड़े हुए हैं, जितेंद्र श्रीवास्तव जी को, जिनकी अनुमोदन पर मैं यहाँ हूँ, और दूसरे जितने भी विभागों के लोग जुड़े हुए हैं, सब दोस्त ही हैं, प्रमोद जी, कौशल जी और दूसरे मित्र। ये बहुत ही अच्छा अवसर है, अच्छा मौका है ये कृष्ण की अनुभूति करने का। रियलाइजिंग कृष्णा जो है वो कृष्णानुभूति है। कृष्ण को कैसे आप महसूस करें, कैसे महसूस करें एक इतना विराट चरित्र जिसने इतने हजार सालों से इस महादेश को और इस विश्व को अपने 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 सम्मोहन में रखा है। नटवर उनको यूं ही नहीं कहा जाता। ये जो 3 कवियों को रखा गया है, इस वाले दूसरे वाले हिस्से में सूर, मीरा और रसखान, 3 अलग अलग धाराएं भी हैं। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन से ये तो हो गया कि जीव और ब्रह्म एक है, लेकिन उससे भक्ति का निषेध हो रहा था। तो जो भक्ति के प्रस्तोता, भक्ति के समर्थक आचार्य थे, सामने आए। आचार्य रामानुज, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, फिर मध्वाचार्य, और उसके बाद में शुद्धाद्वैत के, जो असल में विष्णु स्वामी का ही दर्शन था, रुद्र संप्रदाय वाला, उसके ही कहें कि उसको आगे बढ़ाने वाले थे वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य ने चुन चुन करके अपने समय के सभी महत्वपूर्ण कवियों को जोड़ा। उन्होंने जीवों के 3 तरह के भेद किए आचार्य वल्लभ ने, पुष्ट जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। और कहा कि जो प्रवाह जीव हैं वो तो सांसारिकता में डूबे हुए होते हैं, वो अपने से परे कुछ देख नहीं पाते, लेकिन जो मर्यादा जीव हैं वो वेद मार्ग पर चलते। वेद मार्ग बड़ा मार्ग है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं, उसकी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि वो उस तरह से मुक्त नहीं करता। मुक्त होने के लिए आपको पुष्ट जीव बनना पड़ता है। पुष्ट का मतलब पोषणम तद अनुग्रह, उसके अनुग्रह पर, उस कृष्ण के अनुग्रह पर ही अपने को छोड़ देना। वो जो देगा, जिस तरह से देगा, उसी पर रहना है। ये जो पूर्ण समर्पण है, ये इस भक्ति के मूल में, पुष्टि भक्ति के मूल में है, जिससे कि सूरदास और 7 कवि और आश्रचाप माने 8 कवि मुख्य रूप से, और ऐसे तो कवियों की संख्या बहुत ज्यादा है, जुड़े हुए हैं उस वक्त। तो सूरदास के बारे में यह है कि पहले वह इस तरह के पद नहीं करते थे, लीला पद नहीं करते थे। इस लीला पद को समझने के लिए हम इस बात की तरफ एक नजर डाल लें कि विष्णु के तो 10 अवतार रखे गए हैं, लेकिन उडुपी के जो आचार्य थे मध्व इस मामले में बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि नहीं, 2 ही अवतारों की भक्ति करनी है। भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का अर्थ होता है जुड़ना। किससे जुड़े? जनता किससे जुड़े? तो कहा 2 ही अवतार उसके लिए हैं, एक तो रामा अवतार, दूसरा कृष्णा अवतार।
ये दो की प्रस्तावना मध्य ने की थी, और बाद में जो भक्ति आंदोलन चला तो मध्य के बताए हुए रास्ते पर चला। उस अर्थ में बड़े आचार्य हैं मध्य, द्वैतवाद के जो संस्थापक आचार्य हैं। तो वल्लभ ने देखा कि ऐसा एक स्वामी है, ऐसा एक गुरु है, तब तक गुरु के रूप में थे, स्वामी के रूप में थे। सूरदास गऊ घाट, आगरा और मथुरा के बीच में एक है गऊ घाट, वहां रहते थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे। उनको वो विनय के पद, दैन्य के पद सुनाया करते। वल्लभ आए या उनको अपने पास बुलाया और कहा कि सुनाइए कुछ। तो उन्होंने सुनाया, प्रभु हो सब पत्तन कोटि को, कुछ इसी भाव कि मैं तो सबसे ज्यादा पापी हूँ। वल्लभ ने कहा ये क्या है? उसमें आता है 84 वैष्णव की वार्ता में, जो गोकुलनाथ के द्वारा रची गई कही जाती है, जो उनके नाती होते हैं आचार्य वल्लभ के, कि सूर होय के घिघियात का है, कछु भगवत लीला वर्णन करो। कि तुम तो शूर हो, शूरवीर हो, शूरवीर कभी थोड़ो दैनिक के पद गाता है, दैनिक के पद नहीं गाता। तुमको तो भगवत लीला का वर्णन करना चाहिए। और फिर बदल गई राह, सूर की राह बदल गई और सूर उसके बाद में लीला पद गाने लगे। लीला पद ऐसा गाया कि उन्होंने पूरे इस महादेश को ही उसमें डुबो दिया, निमग्न कर दिया। इतना माधुर्य है, इतनी मौलिकता भी है उनके यहाँ। वो बनी हुई लीक पर नहीं चल रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ी तारीफ की है, उनको बहुत मौलिक स्थापनाओं वाला कवि माना है। इस लिहाज से उनके अपने प्रिय तुलसीदास को उन्होंने पीछे कर दिया सूर के लिए। ये एक बड़ा आचार्य एक बड़ी बात कह रहा है। तो जो सूर के पद हैं, सूर सागर जो है, उस सागर का एक कोना वात्सल्य का है। बच्चा किस तरह से बड़ा होता है, माता पिता उसको देख करके किस तरह से प्रफुल्लित होते हैं, मुदित होते हैं, गदगद होते हैं। और ये चीज यूनिवर्सल, ये इसका संबंध किसी सेक्ट से नहीं हो सकता, किसी धर्म से नहीं हो सकता, किसी रीजन से नहीं हो सकता। बच्चे को बड़ा होता देख करके, उसकी किलकारियां देख करके सभी प्रसन्न होते हैं, माता पिता तो खास तौर से। तो वो चीज ली, और किसी बच्चे की जो बाल सुलभ क्रीड़ाएं हैं, उसकी जो बाल सुलभ क्रियाएं हैं, उसको इतनी बारीकी से देख करके लिखने वाला, कहते हैं विद्वान लोग कि दुनिया का कोई कवि नहीं। एक तो हुआ जो मधुराष्टकम गा रही थी यामिनी जी, वो जो किशोर कृष्ण है, जिसके कहें कि जिस किशोर कृष्ण को ध्यान में रख करके दान लीला और मान लीला के पद लिखे गए। खेलत कान गुटूरन आवत, ये तो बाल लीला है। और लेकिन जो मानो माई या देखो माई घन घन अंतर दामिन, घन दामिन दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिन। ये जो बादलों और बिजली के बीच का खेल है, संगीत और शब्द के बीच का जो तालमेल है। जब शुरू में मुझसे मालती जी ने कहा कि इस तरह से करेंगे जिसमें आप बोलेंगे और मधुलिका जी उसको परफॉर्म करेंगी, तो मुझे थोड़ी हिचक थी। लेकिन फिर मैंने सरस्वती वंदना याद की, जिसमें या कुंदन तुषार हार वाले वंदना में आता है कि वीणा पुस्तक धारणी भयदाम जाट्या अंधकारा पहा। वो कैसी हैं? वीणा और पुस्तक दोनों को एक साथ धारण करती है। तो ये शब्द और संगीत, यही तो है ना वीणा और पुस्तक। वीणा पुस्तक धारणी, तो ये वीणा पुस्तक मिलकर क्या करती है? अभय प्रदान करती है। ये जो डर है भीतर का वो निकालती है। और जो जड़ता है, जड़ता रूपी जो अंधकार है, वीणा पुस्तक धारणीम भयदाम अभयदाम डाड्या अंधकारापहा, उस अंधकार का अपहरण कर लेती, जो जड़ता रूपी
मूर्खता रूपी अहंकार है। ये जो संगीत है, तो एक पक्ष यह है बाल लीला वाला, दूसरा पक्ष उनका जो उनकी जो तरुण रास लीला वाले कृष्ण है, और तीसरा वो जो कृष्ण पीछे हो गए हैं और गोपियां, जो जिसको भ्रमण गीत कहते हैं, जहां पर गोपियों को बोलने का और उनके कहें कि वो ओज को, वैचारिक ओज को सामने रखने का पूरा मौका देते हैं सूरदास। तो मैं इस मतलब सूर सागर के तीनों हिस्सों को सामने रख करके और फिर मधुलिका जी से अनुरोध करूंगा कि वो सूरदास के कुछ पदों का गायन करें। मधुलिका जी। सभी को नमस्कार। मैं अपने पिता एवं गुरु पंडित रामलाल माथुर जी की एक कंपोजिशन सूरदास जी का पद प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके समक्ष। थैंक यू। मैं माखन नहीं खायो, मैं माखन नहीं खायो, मैं माखन नहीं खायो, मैं माखन नहीं खायो। गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, चार पहरी बंसी बट भटको, चार पहरी बंसी बट भटको, सांझ पड़ी घर आयो, मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया, मैं माखन नहीं खायो, मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया, मैं माखन नहीं खायो। मैं बालक बहियन छोड़ो, जीवो किसी विधि पायो, मैं बालक बहियन को छोड़ो, जीवो किसी विधि पायो, बाली बाली सब बाली बाली सब पैर करे, गर्भस मुख लपटायो, मैं माखन नहीं खायो, मैं माखन नहीं खायो, मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया, मैं माखन नहीं खायो। जननी मन की उठी मोरी, इनके कहीं होती आयो रे, जननी मन की उठी मोरी, इनके कहीं होती आयो रे, ये तेरी कछु भेद भजनी, ये तेरी कछु भेद भजनी, जानी पर आयु जाती, मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया, मैं माखन नहीं खायो। बहुत ही नाच नचायो रे, यह ले अपनी लकुटी कवरिया, बहुत ही नाच नचायो रे, सूरदास तब की सही जसोदा, सूरदास जब की हंसी जसोदा, नेउर कंठ लगायो रे, मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया, मैं माखन नहीं खायो रे, मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया,
मैं माखन नहीं खाऊंगी, मैं माखन नहीं खाऊंगी, मैं माखन नहीं खाऊंगी। यह ले अपनी लकुट कमरिया बहुते बहुते नाच नचायो। तो ये जो नटखटपन शरारती रूप है वो बहुत भाया मीरा को, और मीरा अपने होश संभालने के साथ कृष्ण को अपना सब कुछ मान बैठी। ऐसे समाज में जहाँ पर पितृसत्ता बहुत मजबूत हो, मीरा का इस रूप में सामने आना वो बहुत ऐतिहासिक महत्व की चीज। मीरा राजकुल से हैं। राजकुल के बंधन कुछ ज्यादा कठोर हैं। राजकुल में जो मर्यादाएं हैं, जो शर्तें हैं, जो नियम हैं, उनको लांघ पाना वो मामूली साहस का मामला नहीं, काम नहीं। जो हिम्मत राबिया ने की होगी, जो काम अंडाल ने किया, जो काम अक महादेवी ने किया, जो काम महदाइसा ने किया, जो कहें कि मोल की भूमिका है तेलुगु में, जो लल्लेश्वरी की कश्मीरी में है, मीरा को उससे कुछ 21 ही माना जाता है। क्योंकि वो जिस राजस्थानी समाज में है वहां पर उसकी स्थिति थोड़ी भिन्न है बाकी जगहों से। तो मीरा ने जो भक्ति की वो माधुरी भाव की भक्ति, लेकिन उस मधुरता में उस सामाजिक जड़ता को चुनौती है, तीखी चुनौती। जब वो निकली और उनके लिए बहुत तरह की बाधाएं खड़ी की गई, तो उसमें वो सारी परतें, जड़ता की वो सारी परतें उभरती गई। भक्ति का अर्थ भी खुलता गया कि भक्ति का मतलब सिर्फ भगवान से जुड़ना नहीं है, बल्कि जनता से जुड़ना भी है। जो जिस जनता को आप अपना मानते हैं, क्योंकि इसमें मीरा के यहाँ है कि मैं साधु संतों के साथ बैठ करके ये जो आवरण है लोक लाज का, ये जो लोक लाज की बाधा है, उसको उससे मुक्त हुई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज कोई। लोक लाज बेड़ी की तरह है, और उस बेड़ी को, उस श्रृंखला को तोड़ने का काम अपने भक्ति के जरिए, अपनी जो सचेत जागृत भक्ति है उसके जरिए करती है। मीरा की यात्रा आप देखेंगे कितने आचार्यों से मिली अपने समय की, कितने कवियों से मिली। उनके यहाँ तो भीड़ लगी रहती थी। तरह तरह के लोग, तरह तरह के संप्रदायों के लोग, और जो संप्रदायों के नहीं होते थे, ऐसे ही ज्ञान और भक्ति के साधक होते थे, वो भी मीरा के यहाँ आते थे। मीरा को तरह तरह के प्रलोभन भी थे। हमारे संप्रदाय में आ जाइए, हमारे कितने सारे संप्रदाय उस समय सक्रिय हैं और अपने 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 दायरे में लेना चाहते हैं। मीरा मिलती सबसे हैं, चाहे वो रूप सनातन गोस्वामी हो, चाहे वो विट्ठल के शिष्य हों, चाहे दूसरे लोग हों, निम्बार्क वाले हों, क्योंकि जहां पर हैं वहां के उनके भी मानने वाले हैं। लेकिन वो किसी मतलब आचार्य के किसी दीक्षा नहीं लेती। लिया भी उन्होंने ऐसे कवि से, ऐसे पहुंचे हुए संत से जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था, वो रैदास थे। रैदास की यात्रा सगुण से निर्गुण की तरफ है। मीरा की यात्रा सगुण से निर्गुण की तरफ हो गई, और वो सगुण से निर्गुण की तरफ आए रैदास। पहले वो सगुण थे, बाद में फिर निर्गुण हुए, और फिर उनका जो हमारे सामने परिचय है रैदास का, वो तो निर्गुण वाला ही। लेकिन मीरा का पूरा जीवन, पूरा लेखन वो सगुण का है। वो कृष्ण को मानती हैं, और वो कृष्ण को मानना इतना आसान भी नहीं है, वो हम उनके पदों में देखेंगे। लेकिन मीरा जो है, जिस तरह से
पहुंचती हैं रैदास के साथ, वो उसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। ऐसा कवि, ऐसा पुरुष कवि जो स्त्री निंदा नहीं करता, वो रैदास ही है उस समय के। रैदास का जो व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा है, और इसीलिए चाहे झाला रानी हो, चाहे मीरा, चाहे दूसरे स्त्रियां हो, वो उनके साथ उनसे जुड़ी। तो मीरा की का ये जो मीरा ने राम को संबोधित किए हुए भजन लिखे हैं, पद लिखे हैं, उनका अलग से पाठ होना चाहिए, उनका अलग से अध्ययन होना चाहिए। वो उसमें वो उनके सरोकार कैसे बदलते हैं, कैसे और विस्तृत होते हैं वो। लेकिन मीरा लिखती हैं कि जिसको कहा कबीर ने कि ये कोई भक्ति का जो इलाका है वो कोई खाला का घर नहीं है। शीश उतारे भूमि धरे सो बैठे यही माए। जो ऐसा कर सकता है, जिसमें इतनी हिम्मत हो कि अपना सिर खुद ही उतार सके, काट सके और जमीन पर रख दे उसको, वो वही उसी साहसी को भक्ति के क्षेत्र में आना चाहिए। मीरा के यहाँ ये नहीं कि देह का निषेध हो, देह है, मौजूद है, अपने अपने रूप के साथ, अपने रंग के साथ, अपने गंध के साथ, अपने स्पर्श के साथ देह मौजूद है। और मीरा एक स्त्री के अनुभव के साथ कहती हैं, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के संग राजी। दोनों तरीके के पद मिलते हैं। मैं किसके साथ मतलब होना चाहती हूँ सहमत, वो जो कृष्ण है, वो जो सांवला है, उसके साथ जाना चाहती हूँ। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये जो दूसरो है, दूसरा क्या करता है, दूसरा बंधन बनाता है, लेकिन ये जो कृष्ण है वो बंधन नहीं डालता, वो कुंठित नहीं करता, वो व्यक्तित्व में अवरोधक नहीं बनता, वो चिंतन में सीमाएं नहीं खड़ी करता। इसलिए वो उस तरफ जाती हैं, उस कृष्ण की तरफ जाती हैं जहां पर विकास की निस्सीम संभावना है। ये मीरा का चुनाव है, और बहुत सचेत चुनाव है। और मीरा कहती हैं कि अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, दास मीरा लाल गिरधर होई सो होई। जो होना है सो हो, लेकिन मैंने जो निर्णय किया, वो निर्णय, उस निर्णय से अब ये दुनिया, ये देश, ये समाज अवगत है, और मुझे इसको लेकर के कोई हिचक नहीं है। लोक लाज कुल कान जगत कह दई बहाए जस पानी, अपने घर का पर्दा करिले मैं अबला बौरानी। ये जो उद्घोषणा है मीरा की, ये जो मीरा का कहे कि ललकारता हुआ कथन है, ये तब भी बहुत ऐतिहासिक महत्व का था, और आज भी बहुत महत्व का कथन है, और आगे भी रहेगा। क्योंकि ये जो बंधनकारी स्थितियां हैं वो जाने वाली नहीं। उनसे रोज मीरा जैसी जो मनीषी हैं, जो चिंतनशील विदुषियां हैं, उनको जूझना पड़ता है। तो एक कविता क्या है, जैसा निबंध लिखा, 3 बार में लिखा आचार्य शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने, चूंकि वो इस पूरे कहे कि कृष्ण भक्ति के मर्म को समझते हैं, इसलिए वो उनको याद करना बहुत जरूरी है, बार बार जरूरी है। उन्होंने कहा है कि कविता की जरूरत बढ़ती जाएगी जैसे जैसे सभ्यता का आवरण हम पर चढ़ता जाएगा, लेकिन कविता करना उतना ही कठिन, कविता की जरूरत बढ़ेगी लेकिन कविता करना उतना ही कठिन होता जाएगा। उस समय तो आवरण उतने नहीं थे, आज आवरण और ज्यादा है। आज हमारा जो नैसर्गिक स्वरूप है, मनुष्य का जो प्रकृति नेचुरल जो उसका रूप है, उस पर बहुत सारे पर्देदारियां हैं, बहुत सारे आवरण हैं। तो इसलिए इन संतों की वानियों का, इन भक्त कवियों की रचनाओं का महत्व कम नहीं हो रहा है और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो हमको पुनः अपने
प्रकृति स्वरूप में, अपने नैसर्गिक स्वरूप में ले आते हैं, उसकी तरफ घुमा देते हैं। कहती है मीरा कि चुनरी के किए टूक, जो चुनरी है वो उस मर्यादा, उस सभ्यता, उस आवरण का एक बहुत 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 खूबसूरत और बहुत मजबूत प्रतीक है। चुनरी के किए टूक है तो चुनरी मतलब उस अर्थ में कोमल और भंगुर, लेकिन ऐसा है नहीं। उसको टूक करने के लिए बड़ा साहस चाहिए। तो चुनरी के किए टूक ओढ़ लीन्ही लोई, लोई यानी चादर। अपनी चुनरी को फाड़ कर फेंक दिया और चादर ओढ़ लिया है मैंने। चादर ओढ़ लिया, एक तरह से ये डी क्लास होना है। अब वो राजसी ठाट बाट को मैंने बिसरा दिया। जिस तरह से बाकी संत रहते हैं, बाकी साधु रहते हैं, बाकी संत जन दिखते हैं, उनकी रहनी है, मैंने अपनी रहनी वैसी ही बना ली है। चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई, मोती मूंगे उतारी बन माला पोई। मैंने अपने मोतियों को, मूंगों की का जो हार है, जो बहुमूल्य मालाएं हैं, वो उतार करके रख दी, दे दी। और पहना क्या? पहना जो जंगली फूलों की माला है। जिस आप कालिदास को याद कीजिए, उनकी शकुंतला को याद कीजिए, जो किस तरह से मतलब उन बताते हैं कि वो उन फूलों की कहें कि नौ किसलयों की वो है, उसके प्रति उसका आकर्षण है, लेकिन उसके मतलब उसको तोड़ नहीं पाती। तो ये कहती हैं कि जो मोती मूंगे हैं वो उसमें हम अब मेरी आसक्ति नहीं है। आसक्ति है और वो आसक्ति मैंने ट्रांसफर कर दी है, कृष्ण में ट्रांसफर कर दी। और इसलिए माखन सब काढ़ लियो, जो नवनीत है वो सब मैंने निकाल लिया है। जीवन का नवनीत प्रेम है। प्रेम ना हो तो समृद्धि का कोई मतलब नहीं है। समृद्धि के लिए क्या कहा उन्होंने? जो वैभव है उसके लिए क्या कहा? छाछ पियो कोई। प्रेम तो मैंने ले लिया और बाकी जो भी है वो सब छाछ है। माखन सब काढ़ लियो, छाछ पियो कोई। अब ये जो छाछ है, जिसमें कोई नवनीत नहीं है, कोई मक्खन नहीं है, वो उनके लिए है जो प्रेम करना नहीं जानते, प्रेम की तरफ नहीं बढ़ते। बिल्कुल इसी तरह की पंक्ति मिलती है रविदास में। और रविदास दोनों को एक साथ रख करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। रविदास कहते हैं कि थो थो जिनी पछोरो रे कोई, पछोरो जामे निज कन होई। जिसमें कण है, जिसमें अनाज है, उसको पछोरिए, जिसमें सिर्फ भूसा, उसको क्यों पछोर रहे हैं? तो ये जो मैंने मक्खन निकाल लिया है, छाछ बची है, बाकी लोग छाछ ले जाएं। जिनको प्रेम का मोल नहीं मालूम, मैंने वो सूली ऊपर सेज पिया की वो चीज मैंने चुनी। मैंने वो पीड़ा झेली, मुझे नवनीत मिला, मुझे माखन मिला। मेरी दिलचस्पी छाछ में नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मीरा के पद गाने के लिए मधुलिका जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ। मधुलिका जी। मधु आवाज नहीं आ रही ढंग से। मधु आवाज नहीं आ रही ढंग से।
मधु, आवाज ढंग से नहीं आ रही। मालती जी, आपने ठीक कहा कि थोड़ी दिक्कत रही। अब जो इस पद को जिन्हें याद है उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, ऐसे आवाज आ नहीं रही थी, तकनीक की दिक्कत है। और आपने पहले भी इसके लिए जो कहे माफी मांगी है, बात सही है। अब बेहतर होता यही कि हम लोग साथ बैठते इग्नू में या अन्यत्र और आमने सामने बैठ करके जो संवाद होता है। लेकिन पार्थ सारथी जी फिर कैसे जुड़ पाते हैं, जो अमेरिका में हैं, हमारे इतने बड़े स्कॉलर इस कहें कि परंपरा के। तो दोनों चीजें हैं, इस तकनीक की अपनी अच्छाइयां हैं, इस तकनीक की अपनी दिक्कतें हैं। उसके साथ फिर हम तालमेल बैठा पा रहे हैं जितना भी बैठा पा रहे हैं। जिस गिरधर नागर की, जिस नटवर नागर की बात मधुलिका जी कर रही थी, मीरा की माने मीरा को गाते हुए, उसी से आसक्त हुए रसखान। रसखान पर हम बात करें तो हम ये न भूलें कि ये जो कृष्ण भक्ति की धारा है, उसकी बुनियाद में कौन लोग, उसकी बुनियाद में हम देखें तो सबसे बड़ी जो रचना है श्रीमद् भागवत महापुराण। अगर ये महापुराण ना होता,
श्रीमद् भागवत ना होता तो इस कृष्ण भक्ति धारा का जो रूप हम देख रहे हैं, जो इसकी अथाह गहराई हम मतलब समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो शायद नहीं कर पाते। एक तो वह है, और दूसरा जो 12th सेंचुरी के आखिरी में एक बड़ा कवि आता है, और मैंने उसको पढ़ करके ये लगता है कि एक आदमी के लिए एक किताब काफी है उसको अमर बनाने के लिए, और वह किताब गीत गोविंद है। गीत गोविंद इतनी संक्षेप, उसका कथानक भी बहुत कोई वैसा नहीं है, माने मजबूत नहीं है, क्षीण सा कथानक। मेघई मेदुर अम्बरम वन भुआ श्यामास्तमालद्रुमयी, ये जो मंगलाचरण है ना, जिसमें आखिरी में आता है कि ये जो नंद किशोर वनिता, ये दोनों राधा और कृष्ण, ये इसी तरह से लीला करते रहे। इसी तरह से ये अपना कहे कि अपनी प्रेम लीला से हमको आलोकित करते रहे। ये जो भाव है, गीत गोविंद ने असल में कृष्ण भक्ति के लिए जमीन बना दी, और उस पर जो जिसको हम आज की भाषा में वर्नाकुलर्स कहते हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं के कवि चले, वो बुनियाद में जयदेव हैं। जयदेव को याद किए बिना हम कृष्ण भक्ति की याद नहीं कर सकते। जयदेव के साथ में मुझे लगता है कि हम विद्यापति को याद करें, उनकी पदावली को याद करें। विद्यापति ने मैथिली में राधा और कृष्ण के प्रेम की जो धारा बहाई, जो श्रृंगार की असल में धारा है, भक्ति की धारा नहीं, जो उनके यहाँ भी, जयदेव के यहाँ भी श्रृंगार की धारा है। तो जो ये श्रृंगार की धारा है दोनों के यहाँ, वो भक्ति की धारा अलग हुई, प्रेम की धारा उससे उसका असल में विस्तार हुआ, और उसको विस्तार करने के लिए हिंदी में जो कवि सामने आया, अपार साहस के साथ सामने आया, वो कौन? वो है मलिक मोहम्मद जायसी। ये मंच है ऐसा जो प्रबुद्धों का है, और इसलिए ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं कि हिंदी में जो पहला महाकवि है कृष्ण भक्ति का, वो मलिक मोहम्मद। अब ये दूसरी बात है कि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत वो कुछ ज्यादा ही चर्चा में रही, और जो कान्हावत है, जो कृष्ण काव्य है उनका, वो थोड़ा पीछे कर दिया गया। लेकिन कृष्ण के जीवन को, क्योंकि ये जितने भी अष्टछाप के कवि और दूसरे कवि हैं, रसखान हैं, ये इन्होंने मुक्तक में लिखा। बाद में ठीक है, परमानंद सागर है, परमानंद दास ने परमानंद सागर कर दिया, सूर सागर है, ये दिखता है प्रबंध में है नहीं, प्रबंध में कान्हावत ही जायसी का। तो जायसी जो हैं इसके प्रस्तोता हैं, कृष्ण के जीवन को प्रबंध में ढालने का साहस करने वाले। लिखा है जायसी ने कान्हावत के शुरू में कि मैंने तो प्रेम की तलाश में, प्रेम के नायक की तलाश में, प्रेम तत्व की तलाश में तुर्की का पूरा साहित्य छान मारा, फारसी का पूरा साहित्य पढ़ लिया, अरबी का साहित्य पढ़ लिया, और भी साहित्य पढ़ लिए, मुझे वो तत्व नहीं मिला, प्रेम का तत्व नहीं मिला। फिर मेरा परिचय कृष्ण से हुआ, और मुझे लगा मुझे मिल गया। और उसके बाद में जायसी ने वो पूरा कहें कि तैयारी का पूरा ब्यौरा दिया है कि मैंने इस प्रबंध काव्य के लिए क्या क्या पढ़ा। महाभारत है, हरिवंश पुराण है, श्रीमद् भागवत है, और भी वो कृतियों की चर्चा करते हैं कि तब मैंने कृष्ण का ये परम तत्व, प्रेम का जो परम तत्व है, परम चरम रूप है, वो है कृष्ण। तो तब मैंने ये लिखा। तो जो बाकी ये जो दूसरे हैं कवि, चाहे सूरदास हो, चाहे नंददास हो, चाहे परमानंद दास हो, मीरा हो, रस, ये उसके बाद में आते हैं। पहला कवि वो है व्यवस्थित तरीके से लिखने वाला। रसखान पठान थे, और बड़े प्रेमी जीव थे। फारसी में अनुवाद हो चुका था श्रीमद् भागवत का, और वो अनुवाद उन्होंने पढ़ा हुआ था। लेकिन सांसारिक जीव थे,
रसखान, और जिस स्त्री में उनका मन रमा हुआ था उसमें मन रमा उसमें डूबे हुए थे। लेकिन अचानक कोई बात याद आई, श्रीमद् भागवत पढ़ते पढ़ते, फारसी में अनुवाद जो था उनके पास था, जायसी की तरह वो संस्कृत के विशेषज्ञ नहीं थे, तो लगा कि नहीं, जिसको इतनी गोपियां प्रेम करती हैं वो कैसा व्यक्तित्व होगा, जरा समझा जाए। और आ गए वो विट्ठल नाथ के पास। विट्ठल नाथ के पास आए और फिर यहीं के होकर के रह गए। उनकी सारी आसक्ति जो इस कहें कि इस दुनिया के लोगों के को लेकर के है, वो बदल गई कृष्ण भक्ति में। और अद्भुत, मतलब जिस तरह से रसखान के कवित्व और सवैयों का गायन हुआ और जनता ने उसको जिस तरह से अपनाया, उत्तर भारत का कोई व्यक्ति जो रूटेड है, जो परंपराओं से जुड़ा हुआ है, वो रसखान के एक दो छंद याद है उसको, वो जानता है, सुनाता है, मगन होता है, जुड़ता है कृष्ण भक्ति से। कृष्ण भक्ति से जुड़ना मतलब खुद से जुड़ना। हमारी अलग अलग कहें इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में जा रही होती हैं। ये जो भक्ति का मतलब ये जोड़ना, ये जोड़ देती। योग और भक्ति दोनों का मतलब जोड़ना होता है। 3 और 2 का योग कितना होता है, वही योग है। योग का मतलब जोड़ना, सम, जिसको सिग्मा के चिन्ह से हम कहें कि वो समझते हैं। तो ये जो जोड़ना है, योग का जोड़ना कि भीतर में अपने तत्वों को जोड़ देना। भक्ति जो उसके एक कदम आगे है कि भीतर के तत्व तो जुड़े ही, लेकिन जो बाहर के तत्व है वो भी जुड़ जाएं। बाहर के तत्व भी मतलब जनता से भी जुड़ाव हो और उस परम तत्व से, उस कृष्ण से भी जुड़ाव हो। ये दोनों जुड़ाव जब होते हैं, मतलब इधर जो आपका परिवेश है उसके साथ भक्ति हो, और वो जो परम तत्व है, वो जो आराध्य है, इष्ट है, उसके साथ भी जुड़ाव। जो दोहरा जुड़ाव, उसी को भक्ति कहते हैं। इसको समझना जरूरी है। तो रसखान ने फिर जो प्रेम की धारा बहाई, वो तो मतलब वो तो शासक कुल के हैं। उन्होंने लिखा भी है, देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रसखान। जो बात ताज बीबी ने कही थी। ताज बीबी ने कहा था कि हाँ तो मुसलमानी हिंदुआनी हुए रहूंगी मैं, यद्यपि मैं मुस्लिम हूं, लेकिन अब मैं कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हूं ना, अब मैं हिंदुआनी बनकर के जिंदा रहूंगी। ये जो रसखान है उसी धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लिखा उन्होंने कि ये जो मानिनी थी जिसके पीछे मैं लगा रहता था, मैंने उससे अपना संबंध तोड़ लिया है। तोरी मानिनी तेहियो थोरी मानिनी मान, प्रेम देव की छवि है लख। ये जो प्रेम देव है कृष्ण को प्रेम देव के रूप में जो प्रस्तावित किया था जायसी ने, उसी बात को दोहरा रहे हैं। प्रेम देव की छवि है लखी, भय मियाँ रसखान। रसखान क्या थे? बड़े 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 सेनापति होते, बहुत बड़े ऐश्वर्यशाली होते, कौन याद करता? अभी जो हम रसखान को याद कर रहे हैं, वो प्रेम देव की छवि है लखी, भय मियाँ रस। उस प्रेम ने, कृष्ण प्रेम ने उनको रसखान बना दिया। हाँ, रस की खान बना दिया, वो जहां पर जीवन का रस भरा हुआ है। खान यानी कि अक्षय पात्र है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि इनका जो काव्य है उसमें शुद्ध ब्रज भाषा मिलती है, कहीं कोई किसी दूसरे का मेल नहीं है। इतनी सधी हुई इनकी कविता है कि कहीं आप उंगली नहीं रख सकते कि देखिए यहाँ विचलन हो गया है, यहाँ छंद चूक गया, ये नहीं है। रस द्रवित भावोद्रेक है वो रसखान के यहाँ है, और जो उनकी आकांक्षा है रसखान की, वो दिखती है कविता में। मानुष हो तो वहीं रसखान बसो, ब्रिज गोकुल गांव के गौरन। ये जो निसर्ग से दूरी बढ़ती जा रही है, प्रकृति से दूरी बढ़ती जा रही है, फिर प्रकृति की तरफ जाना, क्योंकि तब हम अपने को पाते हैं, अपने को पहचानते हैं। ये जो या लकुटी अरु कामरिया को राज तिहूपुर को तज डारो, ये जो तत्व है
इस लकुटी और कामरिया पर, इस छड़ी पर, इस डंडे पर मैं अपने को, अपने तीनों लोगों का राज मिल जाए तब उसको भी छोड़ दूंगा। और क्या कहते हैं, केतक ही कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों। ये जो कलधौत है, बड़े बड़े चूना पुते सफेद रंग के महल हैं, कितने ही राजमहल को मैं इन करील के कुंजों पर, इन झरबेरी के झुंड पर न्यौछावर कर दूं। ये जो बात है कि अपने को कहाँ ले जाना, प्रकृति की गोद में ले जाना, कृष्ण के पास जाना यानी प्रकृति के बीच में जाना। उनकी जो नित्य लीला होती है वृंदावन में है, जो नित्य लीला है उनकी नित्य लीला गोकुल में है, वहां पर होना यानी कि यमुना तट पर होना, करेल के कुंजों के बीच में होना और तमाल वृक्षों के बीच में होना, श्यामास तमाल द्रुमई। तो वो जो प्रकृति के बीच में होना, यही असल में कृष्ण के साथ होना है। कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। क्या कैसे कैसे मुझे होना है, जो भी सॉन्ग कहोगे मैं सारा करूँ, लेकिन हाँ जो उस मुरली का को नहीं रखूंगी, जो जिस मुरली को क्या है कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरूंगी। ये जो क्या कहते हैं श्लेष है, वो गजब का श्लेष है। ये अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी, ये मतलब कविता का जो मर्म है, कविता की जो ऊंचाई है, वो मिलती है रसखान के यहाँ। रसखान इसीलिए कहे जाते हैं, इसीलिए भारतेंदु ने लिखा है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारियों। कोटिक हिंदू बारिये, कितने करोड़ों हिंदुओं को आप निछावर कर सकते हैं, इतने ऊंचे भक्त हुए हैं। इसलिए जो ये संकीर्णताएं घर कर रही हैं, उनसे रसखान को याद करने का, जायसी को याद करने का, मीरा को याद करने का, सूर को याद करने का यही मतलब है, इसके अलावा और कोई मतलब है नहीं। मैं अब धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसे बनी सिर सुंदर चोटी, जो बाल लीला का वर्णन सूरदास कर रहे हैं, रसखान भी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। प्रेम वाटिका में लिखा है उन्होंने, प्रेम फांस सो फंस मरे, सोई जिए सदा ही। एक मरजीवा नाम की अवधारणा है। मरजीवा का मतलब जो मरकर भी जिंदा रहता है, इसी तरह से जो प्रेम करता है वही जिंदा रहता है। प्रेम फांस सो फंस मरे, सोई जिए सदा ही। जो प्रेम के बंधनों में बंध करके मर जाता है वही जिंदा रहता है। प्रेम मरम जाने बिना, मरि को जीवत ना है। बिना प्रेम का मर जाने हुए कोई मर करके भी जिंदा नहीं रहता। मरजीवा की अवधारणा संतों की बड़ी मतलब केंद्रीय अवधारणा है और यही है। ये जो प्रेम है, प्रेम आप नश्वर शरीर आपका नहीं रहेगा तब भी आप होंगे। रसखान हमारे लिए अभी भी वैसे ही है, यशः काय है, दैहिक शरीर उनका नहीं है लेकिन है। मैं चाहूंगा मधुलिका जी रसखान के छंद कवित सवैया सुनाएं। पहले लोग कहते थे रसखान सुनाइए, यानी कि प्रेम भरी छंद सुनाने के लिए, रसखान सुनाने के लिए कवित सवैया का पर्याय हो गए थे। तो मधुलिका जी रसखान सुनाएं और हम यहीं पर अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मानो से हो तो वही रस खानो, बसों में हो फूले काब के वन। मानो से हो तो वही रस खानो, बसों में हो फूले काब के द्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरों नित्य नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरों नित्य नंद की धेनु मझारन। कहानी हो तो वही वीर को जो
बसेरो पधोमेली कालिंदी फूले कदम्ब की डारन जो खब हो तो बसेरो पधोमेली कालिंदी फूले कदम्ब की डारन राजती हूँ पूरी यान कुटियारू कामरिया परी राजती हूँ पूरी कोट जिडारू आठमू सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराय विसारू आठमू सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराय विसारू रस खाने का मोहिनी आँखिन सो ब्रज के बने बाग तड़ाग निहारो कौटिक मुकले धौत के धाम करील के कुंजन उपरिवारो कौटिक मुकली धौत के धाम करील के कुंजन उपरिवारो मानो से हो तो वही रस खानो बसों मिली गोकुल गाँव के गारन मानुष हो तो वही रस खानो बसों मिली गोकुल गाँव के गारन जी मालती जी, मेरी बात तो पूरी हुई, तो आपके पास माइक। जी आपकी आवाज कट रही है थोड़ी बजरंग जी। आप म्यूट भी थे अभी, आपकी आवाज नहीं आ रही बजरंग जी। जी को धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब जो अंतिम इसका कहें कि रूप है, जो उसका आखिरी चरण है, उसमें जाना चाहिए। रसखान की को जिस तरह से प्रस्तुत किया है मधुलिका जी ने, वो अद्भुत रहा। बाकी लोग भी इसको सराह रहे हैं, मैं भी सराह रहा हूँ। उस रस में, रसखान के रस में डुबो देने वाली प्रस्तुति रही। जी मालती जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मधुलिका जी को। हालांकि मधुलिका जी की आवाज बीच बीच में थोड़ी कट रही थी, पर वो जो माधुर्य है वो तो कहीं छुपती नहीं है। तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। और अब हम लोग कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़े हैं, और मैं सुष्मिता जी से मैं अनुरोध करूंगी that she conclude this program with another hymn in Sanskrit, which has been written by Narayana Tirtha, and it is Madhava Mamava Deva. एंड इसमें मुझे ये बताना मैं जरूरी समझ रही हूँ कि ये जो है ये राग नीलांबरी में है, और हमने शुरुआत की थी कृष्ण को के आह्वान के लिए उनसे निवेदन करते हुए कृष्णा नी बेगने बारो। और अब क्योंकि ये राग नीलांबरी में है, ये जनरली दिस इज यूज्ड as a lullaby to soothe, to help children sleep. तो क्योंकि हम समापन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, इट इज रादर अप्रोप्रिएट ये इस राग नीलांबरी में ये जो बंदिश है, इसको संस्कृत में मैंने अभी बताया, ये सुष्मिता जी गाएंगी, एंड आफ्टर दैट वी विल बी कंक्लूडिंग द प्रोग्राम। सुष्मिता।
Krishna Yadav Krishna Yedukula Krishna Madhava Mamav Deva Krishna Yadava Krishna Yedukula Krishna Madhava Mamav Deva Sadhu Janadare Sarvabhauma Sadhu Janadare Sarvabhauma Sadhu Janadare Sarvabhauma Madhava Mamavadeva Krishna Madhava Mamavadeva Krishna Madhava Mamavadeva Krishna Madhava Mamavadeva Krishna Yadava Krishna Yedukula Krishna Madhava Mamavadeva Ambujalochana Ambujalochana Kambu Subhagriva Ambujalochana Kambu Subhagriva Ambujalochana Kambu Subhagriva Bimbadhara Chandra Bimbanana Ambujalochana Kambu Subhagriva Bimbadhara Chandra Bimbanana Sampayana Sagra Lagna Somauktika Sampayana Sagra Lagna Somauktika Sharada Chandra Janita Madana Sharada Chandra Janita Madana Sharada Chandra Janita Madana Madhava Mamavadeva Krishna Yadava Krishna Yedukula Krishna Madhava Mamavadeva Thank you. After that really beautiful rendering, it would be very wrong of me to continue to speak, but I need to thank everyone formally for helping me to put together this wonderful webinar, which was such a great mix of scholarship and music. So I'd like to thank all our speakers, Professor Bajrang Bihari Tiwari ji, Dr. Parthasarathy, our wonderful singers, Sushmita, Madhulika, and Yamini, for staying with us throughout this program, for putting up with all my requests, all my messages, and being so patient with me throughout. Thank you so much. And I would like to thank all our participants, our technical team, our Vice Chancellor for staying for the entire program and showing his support for us. And of course, all those who have joined us today within the school, outside the School of Humanities, the other schools, directors and heads of divisions, and those who have joined us from the regional centers. I would also like to thank COE for providing us with the links and helping us all to stay connected. And I would like to apologize for all the technical glitches that have occurred because as Bajrangji said, technology is a double-edged weapon. It has its benefits, but it also has its drawbacks. And I would like to say sorry if there was any problem with the connectivity, but it was wonderful being with you all. Thank you so much. Thank you.